guys, welcome to Travelsheesh. Today we will take you to wonderful Bursa where you can enjoy the ride of Teleferik, have a tour with amazing food, some beautiful view and the city tour. So stay with us and enjoy the wonderful Bursa with us. बुरसा इस्तांबुल से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। वहाँ आप कार, ट्रेन या फेरी से भी जा सकते हैं। तो हम निकले अपने ट्रिप पर बाय कार। अगर आप हमारी टर्की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हम थे यदि गोलर में, जहां हम गए थे रेंटा कार पर। तो दूसरे दिन हम निकले बुरसा के लिए उसी कार में। एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल सो यू कैन गो बैक टू अवर चैनल एंड वॉच अवर टर्की सीरीज फॉर ब्यूटीफुल प्लेसेस, हिडन जेम एंड वंडरफुल लेक्स। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवलशीश। आज हम हैं बुरसा में और हमने ली है टेलीफ्रीक। नाउ वी आर गोइंग अप और लेट्स द राइड बिगिन। Hey, it's super fast. Right now we are super up. Let's go. Teleferik ride in Bursa is wonderful experience. It will take you around €15 for adults and €7.5 for kids. And below 6 it's total free, but it's a worthwhile experience to go up there and view all the city down there. And when you reach up there, you will surrounded by nature and all its beauty. We're going to the highest point of Turkey. It's super high. Super high. This Teleferik is worth a ride. आप अभी हमने एक स्टेशन क्रॉस किया है, वहाँ पर आपको ड्रॉप कर देते हैं बट इन द विंटर्स, सो यू कैन टेक द विंटर स्पोर्ट्स लाइक मोटर बाइकिंग, स्नो बॉलिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद ये कि हम अब और ऊपर जा रहे हैं फॉर फर्दर जर्नी एंड इट्स रियली वर्थ इट, रियली अमेजिंग। This Teleferik will take you to the Uludag mountain and the whole region is famous by this name. This wonderful ride will take you to 4 separate stations and each station has something unique to offer all the visitors. It's totally worth it to have this amazing experience and I will definitely recommend you, if you go to Bursa, then take this Teleferik ride. This ride is about 8.8 kilometers long and the duration is about 1 hour if you don't hop out. But if you hop out, then you'll manage the time accordingly. टेलीफ्रीक के फाइनल स्टॉप पर हम रुके हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है। फाइनल स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ काफ़ी शॉप्स मौजूद है, सो यू कैन हैव द फूड, यू कैन हैव द सोवेनियर्स एंड यू कैन यूज द वॉशरूम्स। इट्स अ नाइस प्लेस टू चिल एंड रिलैक्स। स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको नजर आते हैं लाइन ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे, जहाँ पर वहाँ बारबेक्यू भी होता है एंड यू कैन डू योर बारबेक्यू एज वेल। और सामने आपको नजर आता है एडवेंचर पार्क व्हिच इज फेमस फॉर इट्स राइड्स एंड अनदर ट्रेलर। हमने एडवेंचर पार्क को एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइड्स, बट इफ यू लव द राइड्स यू शुड डेफिनेटली गो देयर एंड एंजॉय सम एक्साइटिंग फन। और हम बढ़े नेचर की तरफ और यू कैन से इनटू द वाइल्ड। Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the So हमने भी अपना वॉक टूर कंप्लीट किया एंड एंजॉय किया अपना लंच और बढ़े वापसी की तरफ। वापसी के लिए आपको दोबारा उसी स्टेशन पर आना पड़ता है जहां आपने लीव किया होता है। वहां से आप अपने केबल कार में वापस जा सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शन तो आपको 1 वे टिकट लेना पड़ता है। एंड इफ यू आर एडवेंचरस इनफ तो आपको किसी दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। बट हमारे मैटर में हम गए वापस
Teleferik. We always get back up again. You and me. Ooh, baby, you and me. There's no one else who can make me feel like I can do anything I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. And we're like the way. राइड से वापस आने के बाद हम पहुंचे ग्रैंड बाजार की तरफ. जस्ट लाइक इस्तांबुल, बुरसा में भी ग्रैंड बाजार मौजूद है. वहाँ भी आप जाकर काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं, विच इज़ रीज़नेबल एंड वेरी गुड. इस बाज़ार को एक्सप्लोर करते हुए हमें आई इस्तांबुल की ग्रैंड बाजार की याद. सो इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल एंड यू हैवंट सीन अवर ओल्ड वीडियोस, सो यू कैन गो बैक टू अवर चैनल एंड वॉच ऑल अवर वीडियोस for Turkey series, where we have covered some beautiful gems, some unseen places and amazing lakes. And if you like our content, so please like, comment, share and subscribe to our channel Travelsheesh for more travel videos. उसके बाद हम बढ़े कोजा हान की तरफ, which means the inn of the silk cocoon and historical caravanserai, which is located in the heart of the city of Market District. It is a wonderful experience to explore this historical site and refresh the memory of Ottoman empires. These caravanserais are very good and you can see the market and the old tradition around. Bursa was the first capital of Ottoman Empire and the city of Osman Ghazi, where he built the foundation of Ottoman Empire. This market is full of traditional pottery and utensils which you can take for yourself and your loved ones. And there are several souvenir shops from where you can take the fridge magnets and other things to refresh the memories later. हमने भी वहाँ से काफ़ी शॉपिंग की. बाहर आकर आपको नज़र आती है टर्किश कॉफ़ी, द ट्रेडिशनल टर्किश कॉफ़ी एंड टर्किश टी. तो उसको भी आप वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और हमने भी वहाँ बैठकर टर्किश टी को एंजॉय किया. टर्किश टी एंजॉय करने के बाद हमने दोबारा से अपना वॉक टूर स्टार्ट किया और रास्ते में हमें नज़र आए मार्केट्स विद फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑलिव्स एंड सो मेनी थिंग्स. वापसी में जाते हुए हमें नजर आए द फेमस डोनर शॉप्स एंड कबाब्स एंड साथ ही जफर प्लाजा स्मॉल मॉल. बुरसा इज़ डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग. वहाँ जाकर आप काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, सच लाइक टेलीफेरिक, द गुड फूड, द सिटी टूर एंड विंटर में वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जिसके लिए वो काफ़ी फेमस है. मॉल का राउंड लगाने के बाद हमने किया अपने वापसी का सफ़र स्टार्ट, बिकॉज हमें हो रही थी देर क्योंकि मगरिब हो चुकी थी
इसलिए हम मुड़े वापसी की तरफ टू इस्तांबुल। एंड नेक्स्ट डे हमें निकलना था टुवर्ड्स कतर, हमारी फ्लाइट थी। इसके साथ ही हमारी टर्की सीरीज एंड होती है। नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे विद सम न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी टर्की सीरीज पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे रुखसत। टेक केयर एंड बाय बाय।